I'm Anmol Ahuja. I work as a casting director running a company called Casting Bay. Uh, it's been over 12 years working as a casting director and uh, about 5 or 6 years running Casting Bay as a company. So हम शुरू से शुरुआत करते हैं कि कहानी शुरू हुई कहाँ से. So today when I think of where it all began from, so it actually began from 3 P's in my life, जो कभी कभी एक साथ आ जाते थे, कभी कभी phases में आते थे. So and those 3 P's were passion, perseverance and patience. Coming to the form of art, what exactly art is? अगर सबसे पहले अगर कोई एक सवाल हमें पूछना होता है, सोचना होता है, तो सबसे पहला सवाल आता है कि यार गूगल कर लेते हैं, आर्ट समझने की कोशिश करते हैं. मैंने भी किया. मुझे एक बहुत ही लिटरल मीनिंग ऑफ आर्ट पता चला कि आर्ट है क्या. जब उसके अंदर घुस के सोचने की कोशिश की तो समझ आया कि ये आर्ट इज नथिंग बट अ बेसिक हॉबी. एक हॉबी के साथ हमने शुरू जो चीज की थी उसमें हमारी स्किल्स ऐड हुए और वो एक आर्ट फॉर्म में बदला. सो आज मेरा आइडिया ये है दैट वी टॉक अबाउट योर हॉबी, वी टॉक अबाउट माई हॉबी and how that hobby became an art. So I was about 8 years old when I started doing theater. Theater happened to me by chance. So I started doing theater at an age of 8. Summer vacations थे, मेरी मम्मी ने मुझे मेरी नानी के घर छोड़ा था. नानी के घर के सामने एक स्कूल हुआ करता था जिसको वो चलाती नहीं थी बट उनकी गवर्निंग बॉडी में थी. सो वहाँ पे एक थिएटर वर्कशॉप हो रही थी समर वेकेशन के पीरियड में. तो नानी ने बोला कि जाओ इसको भी रख लो. एंड यहाँ से द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेज हैपेंड फॉर मी. इट वाज अ लॉन्ग जर्नी टू अंडरस्टैंड व्हाट थिएटर इज. मैं आज तक सोच रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली थिएटर है क्या. जब पहला नाटक हमने किया आफ्टर द फर्स्ट वर्कशॉप, नाटक करने के बाद एक चीज जरूर समझ आई कि ये करने में मजा बहुत आता है. जिस चीज को करने में मजा आए और आप उसमें और घुसते चले जाएं, घुसते चले जाएं, घुसते चले जाएं, वो आपका आर्ट बन जाता है बिना सोचे कि वो एक्चुअली बन रहा है. 10 साल का हुआ, दोबारा वो वर्कशॉप की. सो ऐसे मजा आने लगा. एक बार वर्कशॉप के बाद मैं अपनी मदर के साथ वापस आ रहा था घर एंड वी वर वेटिंग फॉर द बस एंड दिस वन जेंटलमैन केम एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू माय मदर. और उन्होंने पूछा आप का बच्चा कितने साल का है. तो मम्मी ने बोला 10 साल का है, अभी हम एक वर्कशॉप कल्मिनेट हुआ है. तो उन्होंने बोला हाँ मैं अटेंड कर रहा था, मैंने देखा है. मैं एक नाटक बना रहा हूँ, क्या आपका बेटा एक्टिंग करेगा. सो माय मदर वाज लाइक एक्टिंग मतलब उसके स्कूल है. तो मतलब आप टेंशन मत लीजिए, सैटरडे संडे को रिहर्सल हुआ करेगी और आप आके यू कैन बी पार्ट ऑफ इट. अब बिकॉज द काइंड ऑफ फैमिली एंड द काइंड ऑफ सिस्टम यू आर कमिंग फ्रॉम, थोड़ा सा घर वालों को अजीब लगता है सोचने में कि ये क्या होता है या ऐसे कैसे होता है या ये कैसे हो सकता है. बट माई मदर वॉज सपोर्टिव. मेरी मदर को समझ आ गया था कि बच्चे में एनर्जी बहुत है, क्योंकि सब इसको शरारती 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 बोलते हैं. तो ये एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए इसको डाल देते हैं. लेट्स सी, बाकी बच्चों से मिलेगा, बाकी लोगों से मिलेगा, कुछ सीखेगा. एंड दैट्स व्हेन माय जर्नी एज एन एक्टर स्टार्टेड. आई वाज 10, आई डिड माय फर्स्ट प्ले. इंटरेस्टिंग फॉर मी, आई डोंट नो अबाउट द ऑडियंस. By the time when I was 13 or 14, I still remember I was in 10th standard. That's when a play happened for me. I was acting, but I wasn't enjoying. मैं enjoy क्यों नहीं कर पा रहा था? Because मेरा दिमाग वो lights पे जा रहा था, मेरा दिमाग audience बैठी हुई है उस पे जा रहा था, मेरा दिमाग यहाँ पे नीचे mics लगे होते थे, lapel mics बोलते थे उन्हें, उस पे जा रहा होता था. तो मुझे लगा कि यार ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक्टिंग उतना मैं एंजॉय कर नहीं रहा हूं. सो द जर्नी स्टार्टेड एज अ चाइल्ड एक्टर, बट बाय द टाइम आई वाज 13 आई रियलाइज दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई रियली एंजॉय. I might be good at it, I might not be good at it.
बट मजा नहीं आ रहा है. और वो मजा ना आने का नेक्स्ट रिजल्ट क्या हुआ, व्हेन आई डिड माय नेक्स्ट प्ले, वाइल परफॉर्मिंग मैं सारे डायलॉग्स भूल गया और डायरेक्टर से बहुत गाली पड़ी. को एक्टर्स ने थोड़ा, दे वर सपोर्टिव इनफ कि हाँ हाँ होता है, ज़्यादा टेंशन मत लो, इट्स ओके, हो जाता है. बट मैंने सोचा कि मैं डायलॉग्स क्यों भूला. उसका रीज़न ये था कि मेरा दिमाग एक्चुअली वॉज नॉट देयर एज एन एक्टर. माई माइंड वॉज boggling between how the lights are being done, how the set is being created, everything else except acting. That's when it was a conscious or at a subconscious level, I started indulging myself with things related to theater, but backstage, because I used to enjoy that more. कॉलेज शुरू हुआ. कॉलेज में हमारा एक दोस्त है जो मेरा अभी कास्टिंग कंपनी में पार्टनर भी है, और ही इज क्वाइट अ फेमस एक्टर, अभिषेक बैनर्जी. I saw him for the first time on stage, and I knew that why he is an actor and I don't want to act, because I cannot be as good as him, only because I'm not enjoying that form of art. So it's starting from where a hobby was started by chance. उसके बाद चीज़ें करते हमारे स्किल्स इंप्रूव हुए, और उसके बाद वो हॉबी स्किल्स के साथ एक आर्ट फॉर्म में चेंज होने लगी. इसमें कुछ प्लानिंग नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है, बट दैट हैपेंड, एंड दैट हैपेंड ऑन इट्स ओन. जिससे मुझे समझ आया कि वाओ, यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट समथिंग, कीप डूइंग इट, एंड थिंग्स विल sooner or later will work out. So I joined Ramjas College in English department, and because Ramjas's dramatic society was active, I joined the dramatic society, and in fact मेरा admission क्योंकि मैं ड्रामा में अच्छा था इस वजह से हुआ. Then while I was doing theater in college, I met this gentleman by the name Mr. Anurag Kashyap, who was very encouraging. And at that point of time, he was working on a film called TEDxD. And because I was in touch with him and I was doing theater in Delhi, he asked me if I'll be able to help him out to reach to local actors. वहाँ पे मेरा, क्योंकि फिल्म थिएटर हम कर रहे थे, फिल्म में इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी लाइफ में, so हमें लगा कि if I can be on set, and AK was encouraging enough that he allowed me. So I started assisting his casting director, Gautam Kishan Chandani. While both Abhishek and I were working, अब यहाँ पर बात आती है your friends, your co-actors, people who are like-minded. So when I was hired by Gautam to work on the project, my idea was that मैं अकेला क्यों? Why not with a friend of mine, you know? And because Abhishek has been a very good actor, so I thought it'll be interesting to see him giving cues to actors in the audition, so that that audition space doesn't only remain like an audition space, but actually becomes the scene the way AK was imagining it to be shot. And that started to happen. The film got over. I went on set, but I had no idea about how a film is made. अब क्यों नहीं पता था? क्योंकि अभी तक हम थिएटर कर रहे थे, अभी तक हम एक फॉर्म ऑफ आर्ट को परस्यू कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे. फिल्म्स आर अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम, कंप्लीटली डिफरेंट. सो जब देवडी पर काम खत्म हुआ तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार ये ऐसा क्यों है, मतलब ये थिएटर से इतना अलग क्यों है. उसके बाद समझ आने लगा कि एक्चुअली अलग उतना नहीं है, अलग इस वजह से है क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है, मैंने कभी फिल्में देखी नहीं है. एंड दैट्स व्हेन, बिकॉज आई वाज स्टडीइंग लिटरेचर, cinema was introduced to me, and world cinema was introduced to me. So I started watching films. When I started watching films, I realized that this is what I enjoy the most. I really enjoyed. While I was watching films, my third year exams happened, and to be honest, I didn't score that well. क्यों? क्योंकि मैं फिल्में देख रहा था. अब फिल्में देखते देखते एग्जाम्स दिए, एग्जाम्स में पास हो गए,
पास होने के बाद अब समझ नहीं आ रहा दिल्ली में हम बैठकर करें क्या. So the only thing I knew at that point of time was theater. So I started producing plays, collaborating with people who were like-minded, who used to enjoy the same process as much as I used to. Then, while I was doing theater, one day I get a call from the same Mr. Gautam Kishan Chandani saying that राज एक फिल्म बना रहा है, तुम काम करोगे? So मैंने बोला हाँ जरूर काम करेंगे. मैंने बोला बट दिस टाइम यू हैव टू टेक मनी, मुझे नहीं करना. बोला नो, द पॉइंट इज दैट if you're not charging for the work what you're doing, that means that A, you're not respecting your own work, B, I am not respecting your work, so I want to pay you for the job you're doing. I was like, wow, that's a brilliant thought. So if you're good at something, do it and make sure that you are paid for that job, because then that means that the other person is respecting you. Then I worked on this film called No One Killed Jessica. I really enjoyed, and there I met few people, completely changed the way I used to think. While working on No One Killed Jessica, it gave me an opportunity to go to Bombay. I was working there as last AD. There were some 8 ADs and I was the 9th AD. AD का मतलब होता है assistant director. So then, after No One Killed Jessica was over, I had no idea what I'll be doing now, because I only knew 2 people in Bombay, and दोनों लोग अपनी फिल्म बना चुके थे और कुछ काम था नहीं. अच्छी चीज ये हुई उस टाइम पे, मेरे दोस्त जो थे, जो कॉलेज में बने, जो आप लोगों के भी अगले साल, अगले से अगले साल, ये जो दोस्त बनेंगे, ये आपके लाइफ के सबसे ज्यादा जरूरी लोग होने वाले हैं, because rest of your life you will be leading with them. So choose your friends right. I was lucky enough to choose it in the best manner, because बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, बॉम्बे एज अ सिटी इज डिफिकल्ट. क्योंकि मेरे दोस्त अच्छे थे तो मुझे ये सारी चीजों में प्रॉब्लम हुई नहीं. एंड आवर फोकस वाज ओनली ऑन वर्किंग. समथिंग व्हिच वाज स्टार्टेड एज अ पैशन स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू प्रोफेशन. While I was assisting, again the same thing happened. What happened with me at the age of 13, when I realized I'm not a good actor. Similarly, when I was assisting, I realized it later, but a friend of mine, Amar Kaushik, who's also a filmmaker, he realized it before me, that Anmol is not a good AD. He's only good with telling actors how to perform, probably not good with paperwork. That's how casting happened for me. When we started working as casting directors, Abhishek and I, casting as a concept was very new. In the West, there were a lot of casting directors. In our Hindi film industry, there were very few, and nobody was taking this job seriously. So there were challenges. There were obviously challenges, but then there was scope to work around those challenges. So exactly this way, we started working. अब यहाँ पर आता है perseverance, जिसके बारे में मैंने आपको बात किया. So पहला था passion, being passionate about something, then perseverance, the zest of doing something related to your passion. And then we started working. We started designing our ways of casting, because there was no set rule. There was never a given formula which we were supposed to follow. So it was an empty stage. We could fill it up with our ideas, how we see things and how we want things to happen. And slowly it started clicking with people. The same thing what we heard back then while we were working on DevD, that the way these guys are taking audition, it's like seeing the scene the way it'll probably eventually happen. That started to happen, and that started to happen more often because we were good at it, A. B, nobody else was doing that. Everyone else was doing the basic concept of ये scene है, ये पढ़ लीजिए, ये बोल दीजिए, done. हम लोगों के लिए होता था कि यार ये खाली
टाइम पास करने के लिए नहीं कर रहे. We are doing this because we are really enjoying it. And we kept on doing it. इसके बाद आता है थर्ड पी, पेशेंस. काम तो हम कर रहे थे, but there were few other people also doing the similar kind of job profile and doing it before us. There was immense competition. Competition was to get work. How will we get work? If we are so good, then why this person is not working with us? And that's when patience started to happen. The third P, the third most important P for any individual coming from any kind of background. And we were patient about it. While we were working, at that point of time, there's a company called the Viral Fever. इन लोगों ने हिंदुस्तान की सबसे पहली वेब सीरीज बनाई थी by the name Permanent Roommates. It's an interesting story. Aruna with few other individuals, जिसका part मैं भी हूँ, we wanted to be part of telling stories, but we were not finding a platform. कोई हमें पैसे नहीं दे रहा था हमारी कहानियां बनाने के लिए, कहने के लिए. So, एक था that we want to tell stories, but even if we make stories, even if we make the best film, हम दिखाएंगे किसको, बात किसके साथ करेंगे, वो समझ नहीं आ रहा था. उस टाइम पर YouTube started to boom in this country, and we realized that YouTube is an open platform. Anyone can go make something and put it out there. And that's exactly how TVF was born. They made a series, the first web series in India, by the name Permanent Roommates, and people started liking it. People started commenting on it, and that's when we realized the importance of public opinion. Audience was directly writing to us in the comment section what they were liking, what they were not liking. And this practice became the most important practice for the next 5 years, how we followed. With TVF, as they boomed, because we were associated with them, we started to do more work. When we started to do more work, things started to follow. This was the year 2014-15. After 2 to 3 years, Prime Videos and Netflix happened in India. And we were fortunate enough to be part of उनके सबसे पहले shows. So be it Mirzapur, Inside Edge, be it Sacred Games, we were part of all this. Only because we never left those 3 P's: passion, perseverance, and patience. So feel free, think what you want to, make your hobbies, your passion, with your perseverance and patience. It will be your art which will be true to you. Thank you so much.